types of action. Types of different types of action we do daily with our body. These are three types of action. First one is of voluntary actions. Voluntary action. Voluntary action, the type of action which control under our willpower. And if we want, do the action. If we don't want, don't do the action. The such type of action is known as voluntary action. That is in under our willpower. That is voluntary action. Just that is writing. मैं लिख रहा हूँ तो I want, if I want I will write, I don't want I will not write. Just picking a pen, if I want I pick up the pen, not want. So मैं चाहूँगा तो वो काम होगा, मैं नहीं चाहूँगा तो वो काम नहीं होगा. That is under our will control or will power. Such type of action is known as voluntary action. Second type of action is of involuntary action. Involuntary, not control under our willpower. Under our willpower means अपने विल पावर में ये नहीं होते हैं. इफ यू वांट और डोंट वांट दैट फंक्शन विल डू. आप चाहोगे या नहीं चाहोगे कार्य होगा, फंक्शन होगा. दैट इज फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन. फंक्शन ऑफ internal organ. Different function of our internal organ, if we want or don't want, that will be continuously occur in our body. Just for example, after eating of food, digestion of the food. Digestion of food. That you want or don't want, don't matter. But after the eating of food, digestion will be there. That is the involuntary action, which is that is internal. Blood circulation, that is of involuntary action. You cannot stop your blood circulation. So all the action which is performed by our internal organs, that is of involuntary action. And third type of action, that is reflex action. Reflex action. Reflex action is of an immediate spontaneous automatic action against stimuli. Any external stimuli. Stimuli क्या होता है? That any external change in the environment that we receive or that we know, that is known as stimulus. Means if anyone touch upon our skin, we see our skin receive a stimulus. If wind is blowing, our skin receive that particular type of response, that is known as stimulus. So any external change in environment, that is known as stimulus. Or the reflex action, an immediate spontaneous, immediate होता हो, spontaneous यानी स्वतः, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक होगा. एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो इमीडिएट एक्शन होता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल देखें, दैट क्लोजिंग ऑफ आईलिड,
ड्यू टू फ्लैश लाइट. अगर फ्लैश लाइट आंखों पे डाली जाएगी तो ऑटोमेटिकली वी क्लोज्ड आवर eyelids. Secretion of saliva. Secretion of saliva by seeing the delicious food. जैसे कोई बहुत डिलीशियस फूड देखते हैं ऑटोमेटिकली मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है. दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. एंड रिमूविंग ऑफ हैंड्स वेन एवर हवर हैंड टच विद द हॉट प्लेट्स. जैसे गर्म प्लेट पे हाथ लगता है तो इमीडिएटली रिमूव आवर हैंड फ्रॉम दैट पोजिशन. दैट इज ऑफ type of reflex action. So these are the reflex action that we do immediate, spontaneous, अचानक से होते हैं, स्वतः होते हैं, उस पर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है. All these such type of action is known as reflex action. Reflex action has following steps. That is reflex. First one is of receptor organ. Receptor organ, that organ which receive the stimulus, that is known as receptor organ. Suppose it is our hand and this is of hot pot. When we touch the hot pot, our skin or our hand is the receptor organ. This is receiving organ. Receiving organ which receive the stimulus, that is of receiver or receptor organ. Second one is of sensory neuron. Sensory neuron transfer the impulse, sensory impulse from receiving neuron to brain, that is of sensory neuron. So this is the sensory neuron. Sensory neuron that transfer the sensory impulse from receiving organ to brain, that is of sensory neuron. Then third one is of spinal cord. It is the part of brain or part of CNS. This is the part of CNS, that is spinal cord, which receive the impulse comes from the receiving organ and interpret the particular message. That is the third portion of reflex action. Then fourth thing is of motor neuron. Motor neuron send the message from part of CNS to effector organ. यहाँ से मैसेज वापस जाते हैं जहाँ से वो इंफॉर्मेशन आई है. सपोज यहाँ पर रिसीविंग ऑर्गन पे अपना जो बॉडी है या कोई भी स्किन है, फिंगर है, टच हुई, दैट मैसेज सेंड टू द CNS by the sensory neuron. Then CNS, the part of CNS that is of spinal cord, which interpret that message and send the message via motor neuron. And fifth part is of effector organ. This is of effector organ which do the function, do the work against the reflex action. इसी से इमीडिएट यहाँ से अपना हाथ दूर हो जाएगा हॉट प्लेट से. So these are the 5 states of reflex action, 5 step of reflex action. First one is of receptor organ which receive the stimulus, which receive the stimulus, and sensory neuron that send the impulse of which receive by the receiving organ. जो रिसीविंग ऑर्गन ने जो इम्पल्स या जो स्टिमुलस रिसीव किए थे उन इम्पल्स को ब्रेन तक सेंड करता है. ब्रेन का स्पाइनल कार्ड उसको इंटरप्रेट करता है, फाइंड आउट करता है इट इज विच टाइप ऑफ एक्शन, और फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाता है इफेक्टर ऑर्गन, और इफेक्टर ऑर्गन इमीडिएट से वहां से अपना हैंड जो है दूर कर लेता है. दिस इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो ये इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सभी में इसी तरह की एक्शन होती है. एंड another is of what is the pathway and what it called. The pathway of reflex action is known as reflex arc. Pathway of
pathway of reflex action is known as reflex arc. The pathway of reflex action, that is known as reflex arc. What is the pathway of reflex organ? Just like stimulus which received by the receiving organ send the message to sensory neuron, sensory neuron send message or impulse to spinal cord, spinal cord send message to motor neuron, and motor neuron to effector organ, and we do the particular function, that is a response. We remove our hand or any other things, any other type of response we do, that is there. This is the pathway of reflex action, that is known as reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क में और भी मैं एग्जांपल बताता हूं कौन कौन से, जैसे जस्ट रिमूविंग ऑफ हैंड्स फ्रॉम hot plates, releasing of saliva when we see the delicious food, it is the example of reflex action. Closing of eyelid when we seeing the flashed light, that is also example of reflex action. Like that, coughing is an example of reflex action. Another example of sneezing. Sneezing is the example of reflex action. So what is the significance or what is the importance of reflex action? Reflex action immediate होता है. अगर इसमें अपना ब्रेन सोचेगा, सोचने में टाइम लेगा, तो क्या होगा, वो फंक्शन हो गया और इमीडिएट वो हो सकता है. विद दैट फंक्शन कैन हार्म आवर बॉडी ऑल्सो. सो इन दैट type of function, it's such type of function where our part of the brain, not brain, that spinal cord interpret that message or immediate do the function within a milliseconds, 0.8 सेकेंड के अंदर ये फंक्शन होता है और इमीडिएट उसका रेस्पॉन्स हो जाता है और वो फंक्शन हो जाता है ऑफ दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले फाइंड आउट किया था मार्शल हॉल ने. मार्शल हॉल ने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को फाइंड आउट किया था कि ये इमीडिएट एक्शन होता है, दैट इज नॉट ए इनवॉलंटरी एक्शन. उसको इनवॉलंटरी एक्शन नहीं कर सकते, दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन. तो उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कभी कभी स्लो हो सकता है, बट इट इज इमीडिएट एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन अगेंस्ट द एनी स्टिमुलाई दैट मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल. जरूर नहीं कि हार्मफुल स्टिमुलस हो, बेनिफिशियल भी हो सकता है. जस्ट लाइक दिस just like releasing of saliva by seeing the delicious food, that is the beneficial reflex action, or removing of hand from the hot plate, that is the harmful action. So both type of reflex action is there, beneficial and harmful.